Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 9, and in our previous lecture, let's have a look at that. What did we study in our last lecture? So in fact, we studied about the financial statement analysis, and we had different kinds of tests, just like a medical test that to judge the health of the firm and to take the measures how to regulate the operations. And as far as the financial statement analysis is concerned, the finance managers has to tackle certain things. For example, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे या फर्म के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ परफॉर्मेंस या तो बहुत बुरी होगी या इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स डिटीरियोरेशन, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें इम्प्रूवमेंट हो रही होगी या कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो ये वो टेस्ट हैं जो बेसिकली फाइनेंस मैनेजर को स्ट्रेंथन करते हैं या इक्विप करते हैं कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में एनालाइज कर सके कि कहाँ पे रेक्टिफिकेशन चाहिए, कहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं जिनके ऊपर कैपिटलाइज किया जा सकता है, और वीकनेसेस को किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है, उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। और जब हम वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस मे कम फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड and it may come from the overall performance of certain areas in the firm। तो उसमें जो रेगुलेटरी मेजर्स हो सकते हैं उसमें एक तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट को एफिशिएंट किया जाए, दूसरा ये है कि फर्म की जो रेपुटेशन है इन द मार्केट उसको बेहतर किया जाए ताकि उसकी सेल्स जो है उस पर असर आ सके, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो एनी थिंग्स विच कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस दे कैन बी दो स्टेप्स विल बी सजेस्टेड बाय दीज टेस्ट। तो हमने टेस्ट कौन से लिए थे? देयर वर एक्टिविटी रेशियोज, एंड इन एक्टिविटी रेशियोज हमने डिस्कस किया था रिसीवेबल टर्नओवर को, यानी एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स एंड रिसीवेबल टर्नओवर इन नंबर ऑफ डेज। और इसमें हमने जो साल के 365 डेज हैं उसके साथ हमने प्रीवियस रिजल्ट को हमने डिवाइड किया टू गेट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो थ्रू ऑल डिफरेंट रेशियोज विच आर एक्चुअली द टेस्ट टू मेजर द हेल्थ ऑफ द फर्म। और उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो थी उनको डिस्कस किया था। इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन था, उसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूजिंग द ड्यू पॉइंट अप्रोच, उसमें इनफैक्ट यू मे बी गेटिंग द सेम रिजल्ट एज इन दिस केस, लेकिन इसमें यह है कि हम सारे ही जो इन्वॉल्व प्लेयर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको हम देख के उनको वी कैन गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग द ड्यू पॉइंट अप्रोच। उसमें अगेन द रिजल्ट्स मे बी द सेम, लेकिन इसमें यह है कि सारे वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स या ये टेस्ट ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज देर आर मैनी स्टेक होल्डर्स एज फार एज फर्म्स आर कंसर्न। उसमें मैनेजमेंट भी है, उसमें ऑनर भी हैं, उसमें सप्लायर्स हैं, उसमें क्लाइंट्स हैं जो कस्टमर जो फर्म के साथ डील करते हैं। तो इन सब स्टेक होल्डर्स का एक ही कंसर्न है कि द फर्म शुड बी परफॉर्मिंग बेटर सो दैट देयर इंटरेस्ट दे आर सिक्योर्ड। ऑनर जो है उसका इंटरेस्ट ये है कि फर्म की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट ये है कि फर्म अच्छा परफॉर्म करे ताकि उनकी जॉब्स कंटिन्यू रहें और उनको अच्छी सैलरी और अच्छे पैकेजेस मिलते रहें। सप्लायर्स का कंसर्न ये है कि फर्म का कैश फ्लो अच्छा चलता रहे ताकि उनको जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली होती रहें। और इसी तरह से जो क्लाइंट्स हैं उनका कंसर्न ये है कि जो फर्म की जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं मार्केट में ऑफ़र की जा रही हैं वो बेहतर क्वालिटी की हों, कॉस्ट एफिशिएंट हों, ड्यूरेबल हों, and things like that. So our today's lecture, it's about funds analysis, cash flow analysis and financial planning. So in fact it's a continuation of our previous lecture, that is chapter number 6. So we will be discussing the first part of this chapter, and let's have a look at the learning outcomes. So after studying chapter 7 you should be able to explain the difference between the flow of funds, that is sources and uses of funds. So the flow of fund statement and the statement of cash flows. आप flow of funds और statement of cash flow इन दोनों statements में differentiate कर सकेंगे, और इन दोनों के जो benefits हैं they are separately associated with each other, उनको आप बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे। And you can define
funds and identify sources and uses of funds, create a sources and uses of funds statement, make adjustments and analyze the final results. So based on these statements, you can make your best judgment and you can analyze the final results. And describe the purpose of and content of the statement of cash flows as well as implications that can be drawn from it. जो कैश फ्लो का पर्पस है और उससे हम क्या चीज़ें इम्प्लीकेट कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू डू दैट. एंड देन प्रिपेयर अ कैश बजट and from forecasts of sales, receipts and disbursements, and know why such a budget should be flexible, and develop forecasted balance sheet and income statement, and then understand the importance of using probabilistic information in forecasting financial statements and evaluating firm's condition. इसमें जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन की हैं, these things we will be discussing in our today's lecture. So first of all, let's have a look कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने जा रहे हैं. फर्स्ट the one is flow of funds, that is sources and uses. कि फंड्स के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ पे हैं और वो उनका यूजेस जो है वो कहाँ पे हो रहा है. एंड देन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एंड देन कैश फ्लो फोरकास्टिंग, रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेट्स, forecasting financial statements. So these are different headings, the headlines we are going to cover in our chapter number 7. First, we are going to discuss the flow of funds statement. So it's a summary of firm's changes in financial position from one period to another. It is also called a sources and uses of fund statement or a statement of changes in financial position. जो funds का flow है उसको हम कैसे चेंज देख सकते हैं. सो वी शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 बैलेंस शीट्स फॉर द ईयर लेट्स सपोज 2006 एंड 7, जो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी हम यही एग्जांपल ली थी बास्केटवुड कंपनी की. उसमें हमारे पास 2005, 2006 और 2007 की बैलेंस शीट्स थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी. तो अगेन वी विल बी यूजिंग द सेम टाइप ऑफ डाटा. सो उसमें 2006 से 2007 में जो चेंजेस आती हैं डिफरेंट हेड्स के अंदर, उसमें कहीं से तो हमें सोर्सेज मिलेंगे फंड्स के और कहीं पे हम स्पेंड कर रहे होंगे उन्हीं सोर्सेज को. और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि द बैलेंस शुड बी द सेम थिंग, द यूजेज एंड सोर्सेज दे शुड बी इक्वल. एंड देन द फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट, इट वाज मैंडेटरी अंटिल 1989 इन यूएस, बट आफ्टर 1989 it was no more required. And this phrase has been replaced by the cash flow statement. Now the required is cash flow statement, but we will be using both of these statements because both are helpful while we are analyzing the firm's financial positions and making future forecasts. Then the question is why to examine the flow of fund statement as it is not mandatory. Actually, one should bother to understand a flow of fund statement that is no longer a legal requirement in the audited annual report, because हमें अपने अकाउंट्स में जो हमारे पास डिफरेंट हेड्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, उनमें चेंजेस किस रुख पे हो रही हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस या एनीथिंग विच इज़ क्रिएटिंग एन अलार्म, वो हम इसमें से देख सकते हैं. और मोर ओवर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है that is not covering all the items in the balance sheet or financial statement, but here in funds flow statement it is touching almost every head in the financial statements. The flow of fund statement, why to examine it, let's have a look at the reasons. It includes important non-cash transactions while the cash flow statement does not. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर हम तकरीबन हर हेड को टच करते हैं और उसका जो चेंज है उसके आइदर इट इज़ अ सोर्स और इट इज़ अ यूज़, उसमें जो चेंजेस आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसको हम देखते हैं. एंड देन इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर एंड ऑफन प्रेफर्ड बाय मैनेजर्स फॉर एनालिसिस पर्पसेस ओवर द मोर कॉम्प्लेक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट. और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ईजी है टू प्रिपेयर. इनफैक्ट यू put both the financial statements, let's suppose for the balance sheet, आपके पास 2006 और 2007 का जो डाटा अवेलेबल है, आप उसमें कैश
कि आगे जो फिगर्स अवेलेबल हैं फॉर 2006 एंड 2007 उसमें क्या चेंज आ रही है, प्लस और माइनस, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रही है, और इसी तरह से सारे अकाउंट्स में किस तरह से चेंज आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल डिटरमिन कि हमने उसके अंदर स्पेंड किया है या उसमें हमने कुछ सोर्स हासिल किया है फॉर फंड्स. सो इट इज़ इन फैक्ट sources and uses of fund statement, and then it helps you to better understand the cash flow statement, especially if it is prepared under the indirect method. अब कैश फ्लो प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं जिनको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. और funds flow statement is particularly helpful if you prepare your cash flow statement using indirect statement method. Then the question is, what are funds? Funds in fact are the firm's investments and any claims against those investments. जो फर्म इन्वेस्ट कर रही है फंड्स को कहीं भी और उसके ऊपर जो रिटर्न्स है उसके the firm can claim them. फॉर एग्जांपल अगर किसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड फर्म जो रिसीव करेगी, दे आर द क्लेम्स, सो दे विल बी अंडर द इन्वेस्टमेंट हेडिंग्स. So these are the funds which firm uses to to capitalize on different opportunities in securities and long-term investments. So it extends beyond just transaction involving cash. अब जो investment होती है, जो cash outflow होता है for one time, it is not only a transaction of one time. That is, you invest to purchase certain securities, या किसी भी फर्म का कोई स्टॉक आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया और आपने एक ट्रांजैक्शन कर दी और फिर आपने फाइनली उसको सेल कर दिया तो आपने एक ट्रांजैक्शन उसको क्लोज कर दिया. इन फैक्ट इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन ट्रांजैक्शन. आप हर साल आपको जो इंटरेस्ट उस पर रिसीव होगा सिक्योरिटीज़ के में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप उनको क्लेम करेंगे, एंड दैट विल मेक योर इंटरेस्ट इनकम एंड दैट विल बी एडेड इन टू सम अकाउंट्स. उसके अलावा आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यू विल बी रिसीविंग डिविडेंड्स ऑन इट. सो इट्स नॉट ओनली वन ट्रांजैक्शन, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन ट्रांजैक्शन. अब हमने सोर्सेज और यूजेस को किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं यू, एस, ए एंड एल. यू फॉर यूजेस, S for sources, A for asset and L for liabilities. अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जब आप बैलेंस शीट्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या होता है, एक्चुअली वी आर कंज्यूमिंग सम फंड्स, और जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो वी आर हैविंग अ सोर्स ऑफ फंड्स, कि उसमें या तो हमने एसेट को सेल किया है या उसके ऊपर हमने कुछ फंड्स रिसीव किए हैं. और इसी तरह से जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इन फैक्ट वी आर हैविंग सम सोर्स ऑफ फंड्स, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इन दैट केस वी आर पेइंग फॉर दोज लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग. सो यू कैन सी हियर अंडर द एसेट there is one negative sign and a positive sign. So the when asset is decreasing, when there is a minus sign, it means it is a source, it is S. Okay, and then when there is a positive sign under the asset, so it would mean कि हमने asset या तो purchase किया है, so in that case it is a use of fund, so the funds will be reducing in that case, whereas the asset is increasing. और liability के नीचे when you see that positive sign, it means it is when the liabilities are increasing, either we are borrowing or we have purchased on credit, something like that. So हमारी जो liability है वो increase करने से हमारे पास source है funds को use करने के लिए, it is a source of fund. And again when our liability decreases, it means we are using these funds, our funds which we have in our hand, we are using that. So this matrix, if you remember it, you will be very much comfortable with your future handling of the funds flow statement. Now have a look at these balance sheet items. We have the BW's determination of sources and uses. हमने sources और uses की statement एक तैयार करनी है, and we are given with the balance sheets for 2007 and 2006. And we will have a look
what is going to be happening, what is happening with the different heads in the accounts of asset side. So either there is a positive or negative impact, and what does it mean? It is a source or it is a use. So let's have a look at the first item. It is cash and cash equivalent. We have a balance of $90. In fact, it is $90,000, and in 2006 it was $100. So there is a difference of 10. So it is a decrease here. There is a minus sign. So minus would mean it is a source of fund. Okay. So and then accounts receivable, from 2006 it has decreased. It means asset has decreased. So it is again a source. And then inventories have increased from 2006 to 2007. So it is a positive sign here. So we have used the fund. And then prepaid expenses, it remained the same. It will make no difference here. And then accumulated tax prepayments, in 2007 it went to 10, whereas it was 9 in 2006. So there is an increase in asset. So it is a use of asset. And then current asset, it will make total of current assets. And now we come to the fixed asset. So we can take it separately here for the fixed asset and depreciation, but let's take it in their net fixed assets form. So we have an increase in our net fixed asset. So it is, there is a positive sign here. So it means हमने अपने funds को again use किया है. And then there are investments in long term. We have long term investment. There is no change in the status of long term investment. No positive or negative sign will be there. And again, other assets, long term type of assets, there is no change there. So we don't have any source or uses in this case. So let's come to the next side of our balance sheet, that is, and here we just write down how much is the difference, positive or negative. Like this, there was a difference of $10. Here is 16, 80, 1, and 70. And the signs we represented in our previous slide. And now let's look at the liability side, what is happening there. So as you remember from that matrix of USAL, कि हमारे पास जब liabilities डिक्रीज होंगी तो इट मीन्स हमने फंड्स को यूज़ किया है, और जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो इट मीन्स वी हैव अ सोर्स ऑफ फंड्स. सो हियर यू कैन सी फ्रॉम 2006 to 2007 our notes payable have decreased. It means there is a negative sign, so we have used our funds to pay the notes payable. And then accounts payable, they are same. And we have accrued taxes, they are again the same figures here. We have accrued liabilities, no change. And then we have long-term debts. Their long-term debts you can see here from 2006 it is $453 and it has changed to $530. So there is an increment in our long-term debt. It means we have borrowed some funds. So it is a source of funds. We have a positive sign here in liability side, so it means it is a source of funds. And then we have common stock here, no change. Additional paid-in capital, no change here. Retained earnings. From 2006 to 2010, retained earnings has increased. So it means we have an increment here. It is a source. It is a source of fund. Retained earnings, increase in retained earnings is a source of funds. And then we come to the next slide and we write down the figures here, the differences like $5, $77 and $53 as we calculated in our previous slide. There was some positive and negative signs here. And then now let's list down the sources and uses in a statement form. So हमने एसेट साइड पे और लाइबिलिटी साइड पे जो जिन आइटम्स को एज अ सोर्स आइडेंटिफाई किया था उनको हम सोर्स के अंडर लिखेंगे, और जिनको हमने यूजेस के तौर पे आइडेंटिफाई किया था उनको हम यूजेस में लिखेंगे. सो नो यू कैन हैव अ लुक हियर अंडर द सोर्सेज हेडिंग वी हैव दीज फिगर्स. सो द टोटल इज $156 and the uses you can see here the increase in inventory, the accumulated tax prepayments,
the notes payable, and the net fixed assets increase. So these were our uses. So the figures should be the same thing. So in case of balance sheet and income statement, when we use the sources and uses, we get the same figures here. So it's again a check also that you have performed correct calculations. And now the adjusting the basic sources and uses statement. What adjustments are there, possible adjustments are there? The following 3 slides, the next 3 slides are Basket Wonders balance sheet and income statement that was discussed in chapter 6. हमने chapter 6 में जो income statement और balance sheet को discuss किया था, next 3 slides में भी हमने वही data लिया हुआ है. This information will be needed to adjust the basic sources and uses statement. So हमने इसको adjust किस तरह से करना है, कौन सी items हैं जिनको हमने miss किया था और उनको हमने adjust करना है. Now let's have a look into it. So first of all, let's interpret different heads. How do we see while we are performing the preparing cash flow statements or funds flow statement? So here you can see at 2007, at the end of 2007, we have a balance sheet that how a firm's financial position is on this particular date. And then we have B here, total assets. It is whatever the BW has earned, and then C is accounts receivable from the customers, and D is future expenses, items already paid, the prepayments, they are our assets. And then we have current assets. In current assets we have cash and likely convertible to cash within 1 year. So all those assets which we can convert into cash within 1 year, we put them in under the current assets heading. And then fixed assets, we have original amount paid for it, and G, less accumulated depreciation, whatever wear and tear we have in our fixed assets, we count for that, and we deduct from the purchase value of our assets to get the final value or the book value, net fixed assets. And accordingly, the liability side, we have the note that asset and liabilities, they are plus equity, they are equal. So in a balance sheet, asset side and liabilities plus equity side, they are equal. And then the B, which is what BW owed and ownership position, you can see here it is equal to our asset side, and this is all what the ownership and liability status of the BW is. And then at point C, we have here accounts payable. We owe to suppliers of our goods and services, and then unpaid wages and salaries, it stands at D. And we have debts payable for less than 1 year and debts payable for more than 1 year. And G stands for our original investment, and H, it is earnings invested. So retained earnings, actually they are kept to pursue the future intentions of investment of the firms, और फर्म बजाय इसके कि वो फंड्स को बारो करे या स्टॉक्स को इशू करे, वो अर्निंग में से कुछ रिटेन कर लेती है टू परसू द फ्यूचर एंडिवर्स ऑफ द फर्म. कौन से नए प्रोजेक्ट जो है फर्म ने स्टार्ट करने हैं, दे कैन आल्सो बी इनिशिएटेड यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the income statement side. What does it mean for different heads? So first of all, the income statement measures profitability over a time period. It is not for a particular date. It measures the profitability of the firm for a particular period. And then the net sales, it represents the cash sales and credit sales. And then we have selling, general and administrative expenses. And then we have earning before interest and taxes. Also we call it as an operating income. और उसके बाद interest expense को deduct करें तो we have earning before tax, and after payment of tax we have earning after tax, which is available for dividend payments, and the portion of it can be spared for the retained earnings as well. So you can see here, out of an earning of $91, $38 have been paid as dividends and $53 are kept
as retained earnings for the future investments. So you can see what heads we need to discuss for the adjustment of basic sources and uses of usage statement. So we need to know the net profits, dividends and retained earnings, and what other accounts we need for the adjustment. There will be depreciation. So after going through the balance sheet and income statement and their account heads, what do they mean? Now let's look at what adjustment do we need in our funds flow statements, the uses and sources statement जो हमने पिछली स्लाइड्स में प्रिपेयर की थी, uses और sources, उसके अंदर हमने कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है. So now have a look at the net profit, the dividends, and one more adjustment, it will be about the depreciation. So the change in retained earnings is composed of profits and dividends. So you can see here the source of source of funds from the net income is $91, out of which we paid $38 as cash dividend and $53 which is a net source of our funds. And then we come to the next slide. It would represent the depreciation and the change in the fixed assets and the depreciation, how it affects. So you can see here the change in net fixed asset is composed of depreciation and fixed assets. So you can see from the difference of the accumulated depreciation, the difference between 2006 और 2007, उसमें जो accumulated depreciation की figures given है उसके अंदर हमने $30 का एक addition किया हुआ है for the depreciation. And then if you look at the fixed assets, उसके अंदर जो increment हुआ है, it means we have used the funds. Fixed asset में increment हुआ है, that is for $100. So the net use, because हमने $30 की provision दी है और $100 का हमने use किया हुआ है, so it means there is a net use of $70 here. So these two adjustments we have to put into our statement. Now the sources would become, हमने जो सोर्स हमारा आइडेंटिफाई किया था उसमें नेट इनकम को भी हमने एज अ सोर्स आइडेंटिफाई किया और उसके अगेंस्ट यूजेज था फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. सो यू कैन सी हियर हमने सोर्सेज में नेट प्रॉफिट को भी ऐड किया है. उसके अलावा हमने जो डेप्रिसिएशन की प्रोविजन की थी दैट इज आल्सो अ सोर्स. सो वी एडेड $30 into it. So it means we added these two figures in our sources and the total goes to $224. And let's look at the usage side. हमने out of our net profit हमने $38 जो था वो dividend पे किए थे, and then we have an additional fixed asset of $100. So we added these two accounts here, these two uses of funds here. So now again it would make the same amount of $224. So you can see here, so by introducing the adjustments, even then the sources and uses should remain the same amount. So this is again a check of your calculation. जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो both of these figures should remain equal. And इसमें एक और चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, it is quite easy because everything is listed in front of you. आपने सिर्फ उसको ये आइडेंटिफाई करना है, it is a source or it is a use. It carries a plus sign or it carries a negative sign. So if you do that correctly, so you will be able to prepare the funds flow statement correctly. And then you can see here the source, how do we analyze the sources and uses statement. Primarily for the sources, primarily through net profit from operations and long-term debt increases. So the sources, they lie in our net profits and the operations and long-term debt increase. हमारे जो डेट्स में इंक्रीज होती हैं या इसके अलावा हमारी जो लाइबिलिटीज़ या जो हम परचेजेस करते हैं क्रेडिट पे, उसमें जो इंक्रीमेंट्स आती हैं, दैट इज़ आवर सोर्सेज. एंड देन हाउ डू वी यूज़ दिस सोर्सेज? इट इज़ प्राइमरली an increase in our inventories and expenditures on capital assets. So these are the uses of sources. The funds we create from sources, we use them
in our inventories and capital assets, the long term investments. उसके बाद हमने now we come to the statement of cash flows. Up till now we discussed the funds flow statement, and now we come to the cash flow statement, जो कि I think you are quite familiar with that statement. इसमें जो हमारा concept है कि we start with the beginning cash flow or the beginning cash balance of the balance sheet, and we end up on the ending cash balance of the balance sheet. या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि in our case हमारे पास दो जो बैलेंस शीट्स अवेलेबल हैं 2006 और 2007 की, तो जो बिगनिंग कैश बैलेंस है इन 2007 इट इज़ द एंडिंग कैश बैलेंस ऑफ 2006. तो बिगनिंग कैश बैलेंस जो है 2007 का विच इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ 2006, तो उसके अंदर जितनी भी कैश फ्लोज के थ्रू चेंजेस आएंगी we can get the ending cash balance of 2007. So that is again a check कि हमने जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर जो नेट चेंज आती है कैश फ्लो के अंदर, जब हम उसको ऐड करते हैं हम अपनी बिगनिंग कैश बैलेंस के साथ, तो वी एंड अप विद आवर क्लोजिंग कैश बैलेंस. सो नो लेट्स हैव अ लुक इनटू इट. A cash flow statement is a summary of firm's payments during a period of time. किसी भी टाइम पीरियड के दौरान जो भी कैश फ्लोज हैं फर्म के, जो कैश पेमेंट्स हैं, दे आर, अगर हम उसको एक स्टेटमेंट में लिखें तो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो देन दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बेस्ड ऑन द फर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. जो फर्म की तीन ही एक्टिविटीज हैं इनफैक्ट जब उसका ऑपरेशन की हम बात करते हैं. वन ऑफ देम इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें फर्म अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड हैविंग डिफरेंट ओवरहेड्स ऑन इट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट इन्वॉल्व इन इट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फर्म्स अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है या उसको सिक्योरिटीज़ में किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फर्म्स अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कहाँ से पूरा करती है, आइदर बारो फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ कैपिटल, या तो उसको मार्केट से बैंक किसी से बारो किया जा सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो किया जा सकता है, या बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं, या स्टॉक्स इशू किए जा सकते हैं. सो दीज आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म्स. सो फ्रॉम ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज whatever cash inflows and outflows they occur, so we put them in a statement form to get the final impact of our cash flow. So that final figure, when we add it up with our beginning cash balance, we will get the ending cash balance. Now let's look at the cash flow from operating activities. It shows impact of transactions not defined as investing or financing activities. These cash flows are generally the cash effects of transactions that enter into the determination of net income. जब हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ आवर सेल्स हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करते हैं टू गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट, एंड आउट ऑफ दैट हम अपने सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस आउट करते हैं. तो देन वी गेट आवर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसके बाद हम इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को उसमें से माइनस करते हैं टू गेट आवर नेट इनकम. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ विल कम अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आफ्टर कैलकुलेटिंग आवर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने जा रहे हैं, सो दैट इंटरेस्ट इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ आवर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. So for our financing activities, the interest we are paying, we are putting it into our operating activities. And on the other hand, the dividends we are paying, actually it's again from our financing activities. उसमें हमारे पास जो स्टॉक्स हैं जो हमने इशू किए हुए हैं उसके अगेंस्ट हमने डिविडेंड्स जो पे करने हैं, so that will remain in the financing activities. Okay, so then if we come to the next slide, we see here the cash inflows. So it occurs from the sale of goods or services and from the interest and dividend income. Okay, so you see here
all the cash flows that a firm is going to receive, it is only through the sale of goods and services and income generated as interest income and dividend incomes. And what are the cash outflows? As it is clear, the suppliers of our inventory, wherever we make some purchases, we have to make payments, and we may pay salaries to our employees, and then we pay interest expense to our lenders, and we pay taxes, and to pay suppliers for other operating expenses, any type of other operating services or whatever. So these are the cash inflows and outflows as far as the operating activities are concerned. So as I mentioned before, it would seem more logical to classify interest and dividend income as an investing inflow, while interest paid certainly looks like a financing outflow. अब हमारे पास जो interest income or dividend income है, actually it is generated from our investing activities. So why we are reporting it under our operating activities? So actually it happened because in voting that occurred in the US Financial Accounting Standard Board, out of 7 members, they voted for this procedure. Out of 7 members, 4 of them, they reported they were in favor of this procedure, while 3 opposed it. So we report the dividend income and interest income in our operating activities. Okay, so then now let's discuss the investing activities. So the investing activities, that is, it is clear the firms would invest in fixed assets and debt or equity securities of other entities. The firms may be purchasing securities or stocks of other securities. So this is all the investing activities. उसमें firms या तो purchase कर रही है या sale कर रही है. So in both cases, either a cash inflow or cash outflow is occurring. अगर firm ने किसी भी securities में invest किया है, it means there is a cash outflow. और अगर कोई fixed asset purchase किए हैं, there is a cash outflow. So अगर आप firm ने इनमें से कुछ भी sale out किया है, it means there is a cash inflow. So then the financing activities. What cash flows they occur from financing activities? It shows the impact of all cash transactions with shareholders and the borrowing and repaying transaction with lenders. जो firm capital, either it is a borrowing or through issuing of stocks. So in both cases, जो भी cash flows occur हो रहे हैं, या at the time of borrowing funds, cash inflow हो रहा है, और payment के वक्त it is going to be outflow. And then at the time of issuing stocks, there is a cash inflow, or sometimes firms they purchase their stocks back, so it is an outflow of cash. So these are 3 different kinds of activities from which we prepare our cash flow statement. So then investment activities से cash flow जो है वो कैसे होते हैं? From the sale of fixed assets, a fixed asset, as it is clear, property, plant or equipment, and then from sale of debt or equity securities of other entities, जैसा हमने पिछली स्लाइड के वक्त भी एक्सप्लेन किया. उसके अलावा कैश आउटफ्लोज हैं. Then it is at the time when the firm purchases plant, equipment or property, and also when the firm purchases the debt or equity securities of other entities. And from the financing activities, cash flows किस तरह से occur होते हैं? You can see here cash flow occurring from borrowing funds and through the sale of firms on equity securities. और cash outflow कैसे होंगे? When you repay the amounts borrowed, or to purchase the firms on securities, or to pay shareholders dividends. So you see here कि investing activities में फर्म जो इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम अर्न करती है, दैट इज रिपोर्टेड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लेकिन फर्म जो डिविडेंड्स पे आउट करती है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इट रिमेन्स एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. यू कैन सी हियर द थर्ड पार्ट, that to pay shareholders dividends. So it is a cash flow happening under the financing activity. So, and also the cash flow that is related to investing activity, which I mentioned before, the interest income and dividend income, it is reported under the operating activities. So after we went through all these
applications are the activities of the cash flow statement, like operating activities, financing and investing activities. Now let's have a look at how do we prepare a cash flow statement. So first we discuss the indirect method. Indirect method mein, as you can see here, we start with the net income of the firm. So as it is clear, it is $91. हमने जो बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट इससे पहले जो जिक्र किया है उसमें अगर आप देखें तो यू कैन सी द नेट इनकम $91 एंड देन वी ऐड बैक डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जिसको हम अपने रेवेन्यूज में से माइनस करते हैं, बट we don't actually make any cash outflow here, so we add it back. So then we have a decrease in accounts receivable. It means कि हमने account receivable में जो अपने debtor से वसूल करने थे पैसे, उसमें से हमने $16 वसूल कर लिए हैं. We have received $16 out of it. So there is a cash inflow. That's why our account receivable figure has reduced. So this is a cash inflow. And then the increase in inventory. Increase in inventory would mean कि हमने inventory को purchase किया है. It means when we make a purchase, so we made a cash payment, so there is a cash outflow of $80. And then there is an increase in accumulated tax prepayment. So we make a provision or we pay taxes beforehand. So in that case, it makes our tax our asset. So our asset has increased. It means we used funds. So there is a cash outflow of $1. So in total, net cash provided or used by operating activities is $56. So this is the cash provided out of our operating activities. And now let's go to the investing activities. How the firm is performing as far as the investing activities are concerned. So as you can see from the balance sheet, all that is changing in our fixed assets, it is $100. So in the addition in our fixed assets is $100. It means there is a cash outflow. So that's why we put a bracket around it, so that it would represent a cash outflow or a negative figure. So this is the total cash outflow from our investing activities. And now the third one, our financing activities. So if you look here, we have a decrease in the notes payable. It means we have made a payment. That's why हमारे जो payable की figure है वो कम हो गई है. So there is an outflow of $5 because our notes payable amount has decreased. And then we have increase in long-term debt. Increase in long-term debt means कि हमने इतने funds जो हैं वो borrow किए हैं. So there is a cash inflow of $77. And then the firm has paid dividends. So the $38 is a cash outflow here. So and then we have the final figure, which is $34 here. So we have three different activities: operating activities, investing activities, and financing activities. So if we add up all these results, so whatever we get, if we add it into our beginning cash balance, so we will get the ending cash balance for the balance sheet. So as I explained before, that from all these three activities, that is operating activities, investing activities, and financing activities, so whatever figures we get, whatever cash inflow and outflow we get from these activities, when we add them up to get the final cash inflow or cash outflow, so when we add these three figures, we get a cash outflow of $10. And when we add it up with the cash balance of 2006, that is the ending cash balance of 2006, and it is actually the beginning cash balance of 2007. So when we add them up, so we get a figure of $90 here. So this is, if you look into the balance sheet, you will find the cash balance at the end of 2007 or cash equivalent, it is $90. So this is again a test that you performed well, you performed the correct calculations. And then you have to make some disclosure, that is how much interest you have paid and how much taxes you have paid. So this is supplemental cash flow disclosures. So in disclosure you can add as much information as you can, but here
we will mention the interest paid and taxes paid. इसका impact जो है it has already been there in our net income. ये net income में से पे होने के बाद हमारे पास net income आई थी, हमारी जो revenues में से पे होने के बाद net income आई थी. After the indirect method of cash flow statement, now let's come to the direct method of statement of cash flows. So under the operating activities, so whatever cash the company receives and the firm pays, the cash firm receives in the form of sales or any changes in the accounts receivable, हमने जो receivables में से जो भी cash receive किया, so we add them up for that particular period to get the cash received. It is the cash inflow for the period. And then we have our supplies, we purchase them on either on cash or on credit. So whatever payments we make in terms of our liabilities and cash purchases, that is a cash outflow. And then what else firm has paid in cash, it is interest paid, and then it is the taxes paid. So then we have a net cash provided, it is $56. So note that under both methods, using the direct method and indirect method, you will get the same figures for the same financial statements. And then now let's move towards the calculation, that how did we calculated these figures of cash receipts and cash payments. So you can see here that this is our cash sales and this is decrease in our accounts receivable. It means again we received a cash equal to $16. So this made our net cash inflow for the period. And then out of cost of goods sold, you can see here we deducted the depreciation. So why we deducted a depreciation? Because depreciation is an expense which is not causing any cash inflow or outflow. तो जो एक्सपेंस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कुछ ऐड नहीं करता, उसको हम इस कैलकुलेशन में से माइनस कर देंगे. सो यू कैन सी हियर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिपोर्ट किया हुआ है, तो हम एक्सपेंस को इनफैक्ट हमने उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ है. So when we decrease the depreciation, so in fact we are getting towards the real cash inflow and outflow. So then we add up all the selling, general and administrative expenses. So it will make a figure of $1,971. So in fact these figures, they include all the payments the company made for the purchase of inventory, for the payment of salaries, for the payment of any commissions or any general expenses and or any administrative expenses. And then there is an increase or decrease in the inventory. As you can see here, there is a figure of $80 here. So there is the company purchased some inventories also, so there was a cash outflow of $80. So then the total outflow which company paid, it is $2,051. And again the income taxes, they are $60, and the accumulated prepaid taxes, it is 1. So you can see in the balance sheet there is a prepayment of $1 extra. The marginal increase in the year 2007, it is $1, it is a cash outflow, and also the taxes company paid, you can see that it from the income statement, it is $60. So total tax paid, it was $61. And this will make the figures of our operating activities under the direct method. And now we come to the investing activities. It is the same thing, any changes that occur into our fixed assets. So there was an increase in our fixed assets of $100. So you can see here a cash outflow of $100. And then we come to the financing activity. So you can see here that decrease in notes payable. For notes payable, it is a source of fund for the company. So company uses the borrowed funds as the financing activities. And also the long-term debts, you can see the increase in long-term debt is a source of fund, and then dividends paid. So whatever dividends paid to the stockholders,
to the common stockholders, to the preferred stockholders, it is a cash outflow. It is $38. So you see here the net cash provided or used by financing activities, it is $34. So again, it is the same as that of in the indirect method. So again, if you add them up, it will make the same calculations. If you add all these cash inflows and outflows, you will get a -10. It is a cash outflow. So when you add it into the beginning cash balance of 2007, which is $100, and you will get the final or the closing cash balance of 2010. So the supplementary cash flow disclosure, you can show here the information, that is the net income, you add back the depreciation and receipts from the accounts receivables, and increase in inventory, that is the purchase of inventory here, and any change in the accumulated prepayments of taxes here to get this figure here. Then so we have the pattern of cash flows. So you can see for every activity there is a pattern of cash flow, either a cash inflow or a cash outflow. So what pattern is suitable for the firm? कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो या आउटफ्लो में कुछ कमी या बेशी हो रही है, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए? कौन सा एक्शन जो है दैट इज़ मोर फेवरेबल फॉर द फर्म? सो यू कैन सी हियर a positive cash flow from the operating activities is good for the firm. It means कि फर्म अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो जनरेट कर रही है टू मीट अदर लायबिलिटीज़. एंड देन अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. When we say negative cash flow from investing activities, in fact, company is increasing its assets. Company is making purchases of assets. So जब assets purchase किए जा रहे हैं, तो it means कि either they are fixed assets or the company is investing in securities or stocks of other companies. So the company has enough funds to invest in other activities. So it means in investing activities there should be a cash outflow. तो जब cash outflow होगा, it means company is making assets for the owners, and at the same time company is earning out of the securities some interest income or dividend income. And then positive or negative cash flow from financing activities. और financing activities में inflow outflow दोनों possible हैं. So it should be in the favor of the company. Sometimes there will be cash outflow to make the payments, and sometimes there will be cash inflow to receive financing from other sources. And about today's lecture, what did we study? The summary of the lecture, the difference between the flow of fund statement and cash flow statement, जिसका हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स का डिफरेंस है, जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, दैट विल मेक द सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स. और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें हम अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लोज को हम डिटरमिन करेंगे. उसके अलावा हमने डिफाइन किया था कि व्हाट आर फंड्स एंड आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स. देन create a source and uses of fund statement, make adjustments and analyze the final results. हमने अपने sources and uses of fund statement में जब पहली स्टेटमेंट तैयार की तो उस वक्त हमने रिटेन्ड अर्निंग्स या डेप्रिसिएशन को अलहदा से रिपोर्ट नहीं किया, हमने उसमें फिक्स्ड एसेट में इंक्रीमेंट को अलहदा से रिपोर्ट नहीं किया. बट व्हेन वी रिपोर्ट देम सेपरेटली, दैट विल बी नोन एज एडजस्टमेंट इन द sources and uses fund statement. And then we described the purpose and content of the statement of cash flows, as well as implications that can be drawn from it, that when it is favorable and when it is not favorable, what the operating activities should generate positive cash flows. I mean, there should be a cash inflow, or investing activities में there should be a negative cash flow, a cash outflow, और financing activities में वो दोनों cash flows possible हैं. उसके अलावा हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड
जो है कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का उसको डिस्कस किया था. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम.